Bismillahirrahmanirrahim. We will continue our discussion regarding different ages of English literature. In our previous class, we studied age of sensibility, that was a part of new classical age, and I had told you that after new classical age, there will be a great change in English literature, and that change was the arrival of romantic revival in English literature. So today we will discuss the romantic period. If we peep into the historical perspective of the romantic age, we counted that from 1798. Why particularly 1798? Because it was the year in which lyrical ballads were published, and the publication of lyrical ballad had heralded the romantic age. From 1798 to 1832, this period in English literature is known as the romantic age. Why up to 1832? What happened after 1832? Because in 1832, Queen Victoria came into power, and afterwards another age started in English literature that is known as Victorian age. So today we will discuss, we will peep inside the different aspects and different writers of the romantic age, and then we will move towards Victorian age. Okay? So the romantic period is considered as the golden period of English lyrics in terms of lyrical poetry. In terms of lyrical poetry, this is known as a golden age. This is also known as the age of revolution. This is also known as the age of revolution, and you must keep one thing in your mind, that all the leading romantic poets, even the William Wordsworth, who is basically considered as a very calm person, was very much influenced by French Revolution. But later on, he distanced himself from French Revolution owing to the gory consequences, owing to the bloodshed that became the result of that revolution. ठीक है ना? तो जैसी कहीं bloodshed न हो, जैसी कहीं Wordsworth जो भी ideal हो revolution. ठीक है? पर ये Wordsworth was a very sensitive person. When he saw bloodshed, when he saw the gory incidents being resulted in the form of revolution, so he distanced himself from that revolution. And in this age, English literature promoted to work on a particular theme, that was the theme for art's sake. He was the art for art's sake जो लिखा theme है. And खास तौर पे romantic poets like John Keats, he was a purely aesthetic poet, so his concern was art more than teaching. But this is not the case with all the writers. For Shelley is known as the most revolutionary among all the romantic poets. Shelley कैसा कहते हैं? Most revolutionary. छाकाणि त revolutionary ॿिया बि हुया. Byron कैसा poet of revolution भी सॾींदा आहियूं, and he also belongs to this age. But Shelley is considered as the most revolutionary among all the romantic poets. So in Romanticism, the scholars started following the concept of poetry that is based on imitation, but this imitation is not the copy of anything. Imitation mixed with imagination and resulting in creation. This is a particular trend in romantic poetry. Imitation copy करण, जैसे बुनियाद पे Plato had discarded poets from his Republic. Plato जो argument माना जो allegation है वो poets के खिलाफ in his Republic, तो चाहिए तो poets क्या करना है? They make the servile copy of things, they imitate things. But Aristotle had corrected him. Aristotle said that by imitation, poets are going to create something new. So basically, poets are not copiers, poets are not imitators. Poets are indeed the creators. So this same theme was brought back in the Romantic age, but this time this creation was the result of imagination, and this was revolt against the reason of
New Classical Age, because New Classical Age had focused on reason. New Classical Age जो वॾे में वॾो कंसर्न हो छा थियो हुयो, वो रीज़न थियो, लॉजिक थियो हुयो, वो शइ जी माना लॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस थियो हुयो. बट romantic era appeared as a revolt against that serious logic and serious reasoning, and they believed that imagination is something where can a poet expresses his feelings and can create something new. तो बाबा जॾहिं इंसान इमेजिनेशन खणी ईंदो त उन इमेजिनेशन जे रिज़ल्ट में वरी असांखे हिकिड़ी नई शइ मिलंदी, क्रिएशन थींदी. ऐं इमेजिनेशन जो वर्क न विझल आहे. S.T. Coleridge जो लिटरेरी बायोग्राफी में he tells us the two types of imagination. असांखे ॿुधाए थो त there are two types of imagination. Imagination जा ॿ क़िस्म आहिनि. One is primary imagination and second is second imagination. So I am going to explain these two types of imagination. Prior to discussing imagination, S.T. Coleridge discusses fancy. So there were two concepts that Coleridge had discussed in his literary biography. He says that every human being has the faculty of fancy. And what is fancy? Fancy is simply the copy of the natural objects. Whatever you see, attention please, listen, and then I will give you chance to write, because these are very technical terms. Yes. Fancy ma murad छा आहे? Coleridge चए थो त तव्हां हिन हॉल में वेठा आहियो. You have seen the spacious hall. You have seen chairs, structured properly here. You see fans are there, lightning is there, teacher is standing there, there's rostrum. He said, when you will be out of this place, will be the part of your memory. Utan memory yo, part of your, and then you can recall it at any time. Means when you are delivering your class, you are talking with any friend, you are explaining anything, that this entire setting will come into your mind. ठीक है? तो इन जेका फोटो स्टेट तव्हांजे ज़हन में छपजी वई, उहा तव्हांजी बेसिकली फैंसी आहे. And fancy is a raw material. Fancy is a raw material, and fancy is a faculty that every human being possesses. Every sane human being. पागल न हुजे, अकलमंद माण्हू जेको बि हूंदो, जिसके पास थोड़ी भी अकल होगी और वो ज़हनी तौर पर ठीक होगा, तो उसके पास फैंसी की फैकल्टी है ही है, या वो चीज़ों को याद करना या इस तरह की सेटिंग थी. अब नाउ afterwards, fancy is a type of simply a memory or image that is created in your mind. उसके बाद he discusses imagination. Imagination is a special faculty drawing raw material from your fancy. ताकि fancy में raw material कड़ी करे, you will imagine this class into a new setting. मान ताकि फोटो स्टेट में आए तो ताकि exactly वाशे दियो, ताकि क्लास के एक नई सेटिंग में पेश करे सको था. एक कुर्सी उन्हें आर्डर में पाई हूँ, पर ताकि दिमाग में कन्वर्ट कर दो, ताकि चाहो that we will place these chairs in another setting, this class will look beautiful. But that simple, styling is known as primary imagination. मानो fancy का निकल कर primary imagination रखा तो, and this is faculty possessed by every human being. हर इंसान के every human being is a faculty of primary imagination. But secondary imagination is something that is very much rare, and that is only possessed by poets, only possessed by genius, only possessed by literary persons. जो को literary मालूम है, वो वरी will take raw material from fancy and primary imagination and convert it into a very complex, into a very new, into a very creative setting. वो है primary imagination मानी की करे इन हाल के लोग को खूबसूरत करे बनाई दो, जो तां चलो तो लती यूनिवर्सिटी में सभी का वधी का प्लेजेंट मजेदार कमजी वैल्यूएबल प्लेस ही हाल. He will present through his ideas this hall in such a better way, in such an improved way, that this hall will not be an ordinary hall, but as if this will be a hall where the future of students is being decided. When you will convert your primary imagination to such a creative genius, secondary imagination. And second imagination is something that is not possessed by every individual, but this is a faculty possessed by poets,
This is a faculty that is possessed by great scholars. This is a faculty that is possessed by genius. You आम माण्हू जो कम ना है. आम माण्हू जे लाइ हर गुल गुल आहे. आम माण्हू जे लाइ हर छोकिरी छोकिरी आहे. आम माण्हू जे लाइ कुर्सियूं कुर्सियूं आहिनि. आम माण्हू जे लाइ हर इंसान इंसान आहे. ठीकु आहे. पर जॾहिं सेकेंडरी इमेजिनेशन तव्हां इस्तेमालु कंदव त तव्हांखे उहा छोकिरी गुल नज़र ईंदी. गुल में छोकिरी नज़र ईंदी. हिकिड़ी छोकिरी में तव्हांखे सॼी काइनात नज़र ईंदी. हिकिड़े फ्लावर में तव्हांखे सॼी दुनिया नज़र ईंदी. ठीक है. तव्हांखे तारनि में अजीब दुनिया नज़र ईंदी. This happens when the secondary imagination is at working. So the entire discussion of romantic poetry was based on imagination. जेका भी discussion हुई, sir, we are discussing romantic age. Okay. So romantic age, I told you guys, it started in 1798 with the publication of lyrical ballades, and it ended in 1832. So in Romanticism, poetry got new definitions. It was Wordsworth who had given a definition that poetry is an spontaneous overflow of powerful feelings. It means lyrical ballades. Okay, that was published in 1798. तंहिंजे करे एज जी शुरुआत में 1798 में कंदा आहियूं. Okay. When we cast glance on the politics of England in this age, जॾहिं ॾिसूं त रोमेंटिक एज में इंग्लैंड में छा पियो थिए त उहो ज़मानो हो when Ireland got united with England. आयरलैंड जेको उहो इंग्लैंड जो हिसो थी वियो. इहो थियो 1801 में आयरलैंड got united with England ऐं इंग्लैंड जो नओं नालो पइजी वियो ग्रेट ब्रिटेन. इंग्लैंड जो नालो छा पइजी वियो? ग्रेट ब्रिटेन. ऐं इंग्लैंड खे पोइ यूनाइटेड किंगडम में सॾियल लॻा. त बाबा इंग्लैंड इज नॉट लिमिटेड टू वेल्स एंड इंग्लैंड अलोन. Now Scotland was already the part of England, and Scotland even today is the part of England. अॼु भी इंग्लैंड जो हिस्सो छा आहे? स्कॉटलैंड आहे. आयरलैंड 1801 में ज्वाइन इंग्लैंड, पर 1922 में 1922 आयरलैंड वरी पंहिंजी अलॻि आज़ादी वरिती. सो अॼुकल्ह आयरलैंड हिकिड़ो अलॻि मुल्क आहे. आयरिश is not the part of England, though they share common literature, they share common history, but Ireland is an independent country. You करें थो 1922 में थियो. 1901 में आयरलैंड had joined England. 1901 में आयरलैंड जेको आहे इंग्लैंड जो हिसो थियो. हलो सही. उन दौर में हिंदुस्तान में छा हलती? हिंदुस्तान में इहो दौर हुयो माना 1898 वारो, ओ सॉरी 1798 वारो खां वठी 1932 में the Mughals were at the downfall. This was the period of decline of Mughal rule. हाणे मुगल रूल छा पे थे? डिक्लाइन पे थे. 1757 में जंग लगी. ठीक है. जेका जंग लगी नवाब सिराजुद्दौला जी वार ऑफ प्लासी हां बैटल ऑफ प्लासी 1757 जंहिंमें पहिरियों दफ़ो अंग्रेज़नि शिकस्त ॾिनी नवाब सिराजुद्दौला खे. ठीक है. वो टाइम हो 1757. इन खां पोइ इंग्लैंड सॉरी इंडिया में another power emerged. हिकिड़ो ॿियो पावर इमर्ज थियो. एंड दिस इज माय स्टेटमेंट. मुंहिंजो स्टेटमेंट आहे. ठीक आहे. पॉसिबली आई मे बी रॉन्ग, बट दिस इज माय अंडरस्टैंडिंग. उन दौर में मराठा हुआ. कहिड़ो हुआ? मराठा. ए बाजीराव, जंहिंते तव्हां फिल्मूं ॾिठियूं, शिवाराव, बाजीराव. ठीक आहे. ये मराठा जॾहिं उभरिया न, a new force was emerging in India. इंडिया में एक नई पॉलिटिकल फोर्स अचे पई. जेकॾहिं मराठा कामयाब थिया न, if Marathas had replaced जेको आहे सो कना मुगलनि खे रिप्लेस करे वञनि न, त अंग्रेज़ एॾो आसानी सां हिंदुस्तान ते कब्ज़ो न करे सघे. मराठनि शिकस्त खाधी. मुगल पाण कमज़ोर थी चुका ऐं ब्रिटिश टुक एडवांटेज ऑफ दैट. अच्छा, मराठनि खे शिकस्त ॾियण में अंग्रेज़नि जो हिसो थियल. अंग्रेज़ वॾा उस्ताद हूंदा. मराठनि खे पैसा ॾींदा, अंग्रेज़नि खे पैसा ॾींदा, हुननि खे मुस्लमाननि खे पैसा ॾींदा. ॿिन्ही खे पाण विढ़ाईंदा. हथियार कंहिंजा इस्तेमालु थींदा? अंग्रेज़ जा इस्तेमालु थींदा. हा बिल्कुलु. अच्छा, हुननि वरी घुरायो मुस्लमान अहमद शाह अब्दाली खे जेको आहे सो घुरायो त बाबा सां मुस्लमान सां ज़ुल्म थियो आहे, तूं असांखे बचा. पोइ उन्हनि मराठनि खे शिकस्त ॾिनी. हिन ते इंडिया में फिल्मूं ठहनि वेठियूं. उन वक़्त में अकबर शाह टू जेको आहे सो हिंदुस्तान जो जेको आहे सो बादशाह हुयो ऐं उहो पेंशनर हो ब्रिटिश जो. माना बरतानिया वारनि खां पेंशन वठंदो हुयो बादशाह, बट ही यूज्ड टू सीक पेंशन फ्रॉम ब्रिटिश
गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट खां छा वठंदो, पेंशन। पेंशन वठंदो। वरी 1843 में अंग्रेज़नि जेको आहे सो सिंध ते कब्ज़ो कयो, दे ऑक्युपाइड सिंध। आस्ते आस्ते हाणे ब्रिटिश वर टेकिंग कंट्रोल ऑफ ऑल द टेरिटरीज़ ऑफ इंडिया। ऐं 1857 में जेका जंग लॻी, जंहिंखे असां सॾींदा आहियूं वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, अंग्रेज़ सॾींदा आहिनि हुनखे छा, म्यूटिनी, द वॉर ऑफ रिवॉल्ट, जंहिंखे गदर बि सॾींदा आहिनि। 1857 में लॻी, जंहिं खां पोइ बहादुर शाह ज़फ़र द लॉस्ट मुगल एम्पायर वॉज इम्प्रिज़न्ड, उनखे इम्प्रिज़न करे अंग्रेज़नि कारे मोकिले छॾियो, रंगून मोकिले छॾियो बर्मा। कारे पानी सदा सुठे हिकिड़ो जज़ीरो आहे, ठीकु आहे, बर्मा में। उन ते फिल्म आई अथव काला पानी जे नाले सां। दैट इज़ अ सेपरेट आइलैंड, उन आइलैंड में उनखे कैद करे छॾियो, ठीकु आहे। This was the political condition of India, political condition of England at that time. उन दौर में विलियम वर्ड्सवर्थ एंड एस टी कोलरिज, ठीकु आहे, इन्हनि गॾिजी सॼी करे लिरिकल बैलेट लिखियो हुयो, पर उन लिरिकल बैलेट्स प्रीफेस वाज रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। अच्छा, इहा बड़ी मज़ेदार स्टोरी आहे। एस टी कोलरिज खे बेसिकली इश्क हुयो जो पागल डोरोथी वर्ड्सवर्थ सां, उन करे वर्ड्सवर्थ जे घर में ईंदो हूंदो हुयो। सो दे बोथ कोलैबोरेटेड टू राइट टुगेदर, गॾिजी सॼी लिरिकल बैलेट्स इन्हनि लिखिया। मेजर कंट्रीब्यूशन वाज फ्रॉम वर्ड्सवर्थ साइड, वर्ड्सवर्थ मेजर कंट्रीब्यूशन हो, एंड वर्ड्सवर्थ हैड रिटन प्रीफेस टू लिरिकल बैलेट। बट ए प्रीफेस तव्हांखे यादि करणु खपे, प्रीफेस टू लिरिकल बैलेट बाय वर्ड्सवर्थ, प्रीफेस टू जेको आहे सो हुनजो कैंटरबरी टेल्स जो जेको आहे सो चौसर जो लिखियलु आहे, ठीक है। अड़े तरीके से डिफरेंट प्रीफेसेस आर देयर दैट आर वेरी मच फेमस। अच्छा, व्हेन वर्ड्सवर्थ रोट प्रीफेस टू लिरिकल बैलेट, देयर अपीयर डिफरेंसेस बिटवीन कोलरिज एंड वर्ड्सवर्थ। कोलरिज एंड वर्ड्सवर्थ जो झगड़ो थियो। वर्ड्सवर्थ चए पियो त पोएट्री शुड बी रिटन इन सिंपल वर्ड्स सो दैट ऑर्डिनरी पीपल मे अंडरस्टैंड। पोएट्री जी लैंग्वेज कहिड़ी हुजणु खपे, सिंपल हुजणु खपे, ॻोठाणी हुजणु खपे, एवरीडे लैंग्वेज हुजणु खपे, त जीअं आम माण्हू हुनखे समझी सघे। कोलरिज चवंदा बाबा पोएट्री यार गरीब गरीब ना समझता है। So the language of poetry should be elaborated one, and it must include certain elements that people must put their effort to understand it. माण्हू खे थोरो गौर करणु घुरिजे न, सम्झनि त सही न, बाक़ी सिधी ॻाल्हि सुठी निकिरंदो त तव्हां पोएट्री कहिड़ी थींदी। अच्छा, असांजे सिंध में बि अथव, सिंध में ॿ वॾा शाइर आहिनि, उन्हनि ॿिन्हिनि जो मुक़ाबिलो थींदो आहे। हिकिड़ो शेख हयास, उस्ताद बुखारी। उस्ताद बुखारी वाज द फॉलोअर ऑफ वर्ड्सवर्थ, चवंदो त शायरी छा हुजणु खपे, सिंपल पोएट्री हुजणु खपे, सिधी हुजे। उस्ताद बुखारी जी पोएट्री कहिड़ी सिंपल आहे तव्हांखे न? उस्ताद बुखारी चए त सिंध जे सूरनि जो न आहे कोई आंध पांध, सिंध जे सूरनि जो न आहे कोई आंध पांध, घर में ॿ वेकल ढगियूं हिकु कमज़ोर डांद, पोइ बि शहपर खे वठी ॾींदे चए थो सोट खां खणो अथमि पनाह। How simple it is. Everyone can understand it, regardless of his education, regardless of his academic background. हर माण्हू सिधी ॻाल्हि सम्झ में माण्हू सम्झी सघे थो। उस्ताद बुखारी जो रोमांटिक शेर ॿुधायां त पोइ कहिड़ो हूंदा। उस्ताद बुखारी थो चए त ही आङुरियूं क हुस्न वारे जे वारनि में न आहिनि। ऐं ॿुधो तव्हां लाइ उस्ताद बुखारी छा चए, ही आङुरियूं क हुस्न वारे जे वारनि में न आहिनि, न का सींद ठाहिनि, न का सींद ठाहिनि, फणी थी पवण लाइ आतियूं बि आहिनि। फणी वारनि ठाहिण लाइ फणी थी पवण लाइ आतियूं बि आहिनि, ॿियो न त भला वांदियूं त आहिनि। फणी थी पवण लाइ आतियूं बि आहिनि, ॿियो न त भला वांदियूं त आहिनि। पोइ इन्हनि ई हथनि में कलम खे खणूं था, धड़ा धड़ धड़ा धड़ धड़ा धड़। It was such a great style by someone. Sheikh Hayas, on the contrary, वो रिचाओ कि तो सखी पिया के मिली ते चए जाऊं चांदनी तो सिवा न थींदी, अची त मन जे उमास में आ छो त ॿी राति का न थींदी, कॾहिं बि तोते दुआर दिल जा न ॿूट बा तूं भली गहरी आ, बलुड़क वारा तॾहिं बि हूंदा मता चई हा जी न थींदी। हाणे तव्हां ॿुधायो सखी किना सम्झो, उमास किना सम्झो, हाँ दुआर दिल जा तव्हां किना सम्झो। So for understanding we need an academic vocabulary, we need that much understanding. पर उस्ताद बुखारी के तव्हां आम माण्हू जे साम्हूं आम मजमे में where even illiterate people are there, spontaneous overflow, powerful feeling आहे, हर माण्हू खे सम्झी सघे थो। So this was basically the point of difference between S.T. Coleridge and William Wordsworth. हाणे इन्हनि में हिकिड़ा असां वटि टे ग्रुप आहिनि। There are three groups among romantic poets. उनमें जेको पहिरियों ग्रुप आहे उनखे असां चवंदा आहियूं अर्ली रोमेंटिक्स, ऐं उनखे असां चवंदा आहियूं लेक पोइट्स। लेक पोइट्स छो चवंदा आहियूं? बिकॉज़ दे वर द रेजिडेंट्स ऑफ लेक डिस्ट्रिक्ट। इंग्लैंड में हिकु इलाइक़ो आहे जेको पाण खैरपुर आहे,
ये नारो ये नारे वांगुरु लेक डिस्ट्रिक्ट आहे उन इलाइक़े जो नालो लेक डिस्ट्रिक्ट आहे उन में हिकिड़ी लेक आहे बि नेचुरल लेक आहे बि कने के उन लेक कोर्स सभु उन में टे राइटर्स ईंदा आहिनि उन्हनि में पहिरियों त हुन विलियम वर्ड्सवर्थ आहे ॿियो त मिस्टर कोलरिज आहे टियों त हुन में केरु आहे रॉबर्ट साउथी आहे ठीकु आहे ऐं तव्हांखे मज़े जी ॻाल्हि ॿुधायां त रॉबर्ट साउथी among them became the poet laureate and after the death of Robert Southey William Wordsworth became the poet laureate and William Wordsworth खां पोइ केरु थियो poet laureate Tennyson became the poet laureate हाणे हिते हलूं and when we study the scholars of romantic poetry त असां वटि पहिरियों नालो अचे थो विलियम वर्ड्सवर्थ जो 1770 में ॼाओ बादशाह 1850 में he got a very long life घणा साल में थियसि 80 साल 80 years पर 80 साल वर्ड्सवर्थ जा कम जा ई आहिनि वर्ड्सवर्थ जो एक्टिव पीरियड आहे वधि में वधि घणा साल 30-40 साल उन खां पोइ वर्ड्सवर्थ मिड़ी ज़िंदगी गुज़ारी यानी कि चवंदा न त ज़िंदगी रुॻी गुज़ारती न आहे जी भी ज़िंदगी काउंट कहिड़ी थींदी आहे जी भी ज़िंदगी काउंट उहा थींदी आहे जेका ज़िंदगी तव्हां जियो वर्ड्सवर्थ lived for 80 years no doubt Wordsworth is considered as the greatest poet of English history romantic age जो वधि में वॾो poet आहे पर on other hand Keats lived only for 26 years Keats घणो रहियो 26 years 26 साल रहियो and in these 26 years of Keats life Wordsworth की 80 साल जी ज़िंदगी कुर्बान 26 साल में Keats जेको कमु कयो न Wordsworth 80 साल में उहो करे न सघियो Wordsworth जा आख़िरी साल त रिटायरमेंट जा साल आहे ज़िंदा हुयो पहिरियों शुरूआत में कमु करे चुको हुयो तंहिंजे करे हुनजो नालो हुयो लिरिकल बैलेट लिखी चुको हुयो प्रीफेस टू लिरिकल बैलेट लिखी चुको हुयो तमामु सुठी शायरी करे चुको हुयो ईअं आई डोंट मीन टू बी लिटिल वर्ड्सवर्थ मुंहिंजी हैसियत कान्हे का मां वर्ड्सवर्थ जे ख़िलाफ़ ॻाल्हायां पर वर्ड्सवर्थ बाक़ी ज़िंदगी पई वञी गुज़ारी ठीकु आहे कीट्स 26 सालनि में उहो कमु कयो ऐं मां अक्सर करे पंहिंजे शागिर्दनि खे चवंदो आहियां ऑफन टेल एंड आई एम गोइंग टू रिपीट इट had Keats lived like Wordsworth जेकॾहिं Keats Wordsworth वारी ज़िंदगी गुज़ारे हा न there had been no comparison of Keats with any poet of the world दुनिया जी कंहिं बि शाइर जो Keats सां मुक़ाबलो छो त 26 साल में he wrote such wonderful poems such a wonderful poetry 26 साल में unfortunately died because of tuberculosis TB करे वीचारो गुज़ारे मुकालो करे शहीद थी वियो वीचारो पर जेकॾहिं ही न 40-50 साल गुज़ारे हा त कमु आहे छा हुयो कमु आहे पर नेचर खे हर शइ जी पंहिंजी जस्टिफिकेशन आहे वर्ड्सवर्थ इज़ नोन एज पोएट ऑफ नेचर इन मशहूरु डायलॉग आहे त नेचर इज़ माय टीचर एंड आई एम इट्स क्रीचर नेचर मुंहिंजी टीचर आहे मां हुनजो छा आहियां क्रीचर आहियां उन तब्दील करण वारो हिन खे पोएट ऑफ चाइल्डहुड बि सॾिबो आहे इज़ ऑल्सो नोन एज पोएट ऑफ चाइल्डहुड मशहूरु जेको कोटेशन आहे त चाइल्ड इज़ द फादर ऑफ मैन ॿुधो अथव न चाइल्ड इज़ द फादर ऑफ मैन इहो वर्ड्सवर्थ जो आहे ठीकु आहे वर्ड्सवर्थ के असां लेक पोएट बि सॾींदा आहियूं अच्छा वर्ड्सवर्थ इज़ एसोसिएटेड विद पैंथियज़म वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट वर्ड्सवर्थ के साथ एसोसिएटेड आहे पैंथियज़म के सिंधी में असां छा चवंदा आहियूं वहदत वजूद जो माना देयर इज गॉड इन एवरीथिंग देयर इज गॉड इन एवरीथिंग न देयर इज गॉड इन एवरीथिंग न एवरीथिंग इज गॉड पैंथियज़म स्टैंड्स दैट एवरीथिंग इज गॉड हर शइ छा आहे खुदा जो मज़र आहे हर शइ खुदा आहे ठीकु आहे इन खे सभु वहदत वजूद उन जे मुक़ाबले में वरी ॿियो आयो वहदत शूद में हूंदो आहे त हर शइ में खुदा जी हिकमत मौजूदु आहे पर खुदा न आहे ठीकु आहे सो दीज आर टू डिफरेंट स्कूल्स ऑफ थॉट्स सो पैंथियज़म बिलोंग टू वर्ड्सवर्थ बिलोंग टू पैंथियज़म वेयर ही बिलीव दैट एवरीथिंग इज गॉड हिन खे असां फादर ऑफ रोमांटिक एज बि सॾींदा आहियूं वर्ड्सवर्थ इज ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ रोमांटिक एज ऐं वर्ड्सवर्थ जो जेको मशहूरु वर्क्स आहिनि दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ वर्ड्सवर्थ इज प्रीफेस टू लिरिकल बैलेट आहे उन खां अलावा लिरिकल बैलेट हिन जो कंट्रीब्यूशन आहे हिन जो वॾो लॉन्ग पोएम आहे द प्रील्यूड हिन मशहूरु पोएम कहिड़ो आहे द प्रील्यूड इन विच ही डिस्क्राइब्स द स्टेजिस ऑफ मैन्स डेवलपमेंट इन टू पोएट हिकिड़ो नंढो ॿारु वॾो थी करे कीअं हिकिड़े शाइर में कन्वर्ट थिए थो उन में ही हैज़ रिटन 4 स्टेजिस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंसानी डेवलपमेंट जा घणा स्टेज लिखिया आहिनि 4 स्टेज लिखिया हा प्रील्यूड हिकिड़ो ई वॾो लंबो पोएम आहे हुन में हुन पंहिंजा सॼा एक्सपीरियंसिस ॿुधाया आहिनि ठीकु आहे 4 स्टेज मूंखे विसरी वञ पहिरीं एडोलेसेंस आहे पहिरियां जेको आहे सो चाइल्डहुड आहे पोइ एडोलेसेंस ईंदो आहे रोमेंटिक पोएट्री मां घणी पढ़ाई न आहे
बस मूंखे नाला ख़बर आहिनि. आई हैवंट gone into the depth of that. हसन साहब पढ़ाईंदो आहे. हसन साहब का नालो छा कंदो तव्हांखे ॿुधाईंदो. उन खां बाद मुंहिंजी मशहूरु पोएम आहे डेफोडिल्स. ठीकु आहे. आई वॉन्डर लोनली एज अ क्लाउड. ठीकु आहे. मशहूरु. ॿियो हुन जो मशहूरु पोएम आहे टिंटन एबे. टिंटन एबे वॉज बेसिकली ए प्लेस. हीअ ॾाढी ख़ूबसूरत प्लेस ही. हुन ते वर्ड्सवर्थ अक्सर ईंदो ऐं उन्हनि ते वेही जेको आहे सो वर्ड्सवर्थ शायरी कंदो. टिंटन एबे. वर्ड्सवर्थ जा काफ़ी पोएम तव्हां पढ़िया बि आहिनि because they are part of our syllabus. Daffodils is part of our syllabus. Solitary Reapers is part of our syllabus. और लूसी ग्रे is part of our syllabus. अच्छा लूसी ग्रे ते वर्ड्सवर्थ जो हिकिड़ो पोएम न अथव. There is a series of poems and those are known as Lucy poems. Those are known as Lucy poems. And Lucy is an imaginary character. जो imaginary character आहे उन ते हिन जा इलाही सारा poems आहिनि. ठीकु आहे. त उन मां मशहूरु हिकिड़ो लूसी ग्रे आहे जेको असां पढ़ंदा आहियूं. अच्छा ॿियो हुन जो हिकिड़ो सोनेट कंपोज अपॉन वेस्टमिनिस्टर ब्रिज. तव्हांजे बस्तीअ में इंटर में तव्हांजो आहे. हा सोनेट कंपोज अपॉन वेस्टमिनिस्टर ब्रिज. वेस्टमिनिस्टर लंडन जी ब्रिज आहे. उन ते सुबुह जो सवेल वञी जेको आहे सो वर्ड्सवर्थ वञी सोनेट लिखियो. उनजी पहिरीं लाइन मूंखे ॾाढी वणंदी बि आहे. मां कोट बि कंदो आहियां. उहो वर्ड्सवर्थ में चवंदो आहे डल विल ही बी ऑफ द सोल हू जस्ट पास बाय. चए थो सफ़ा ईअं डल हूंदो मोगो हूंदो जेको हिन अहिड़े ख़ूबसूरत नज़ारे खे बसि ॾिसी हलियो वञे. सम्झो नेचर जो ख़ूबसूरत मंज़र हुजे ऐं उन मंज़र खे माण्हू इग्नोर करे बसि हलियो वञे. चए थो डल हूंदो हुन जे रूह में छा हूंदो. सफ़ा मोगो आहे माण्हू आहे बेकार माण्हू आहे जेको नेचर खे इंजॉय न करे. वर्ड्सवर्थ जे मशहूरु पोएमनि मां हिकिड़ो पोएम आहे द एक्सकर्शन. रेम्बो. रिवोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस. रिटन इन मार्च. माइकल. ओड ऑन इमॉर्टलिटी हिन जो मशहूरु पोएम आहे. And some famous quotes of Wordsworth. Wordsworth said, "The child is the father of man." Child is the father of man. कहिड़ी अलॻि-अलॻि. अच्छा प्रीलूड अलॻि किताब जे सूरत में छपियल आहे. प्रीलूड अलॻि आहे. He has written 389 poems in his life. अच्छा 389 poems. 389 in the long poems हूंदा मशहूरु वॾा. हूअं त वर्ड्सवर्थ इलाही सारा पोएम लिखिया आहिनि. ठीकु आहे. पर 389 हुनजा माना मशहूरु जेके वॾा वॾा पोएम हूंदा. अच्छा वर्ड्सवर्थ चए थो त नेचर नेवर डिड बेट्रे द हार्ट दैट लव्ड हर. मशहूरु कोटेशन आहे वर्ड्सवर्थ जी. चए थो नेचर नेवर डिड बेट्रे द हार्ट दैट लव्ड हर. जेका दिलि नेचर सां प्यार कंदी नेचर हुन सां कॾहिं धोखो न कंदो. जेका दिलि नेचर सां प्यार कंदी नेचर हुन सां कॾहिं बि धोखो न कंदी. इहो हिन चयो टिंटन एबे में. छा में चयोईं. टिंटन एबे में चयोईं. Wordsworth said the poetry is a spontaneous overflow of powerful feelings. ये छा में चयोईं. lyrical ballad में चयोईं. Wordsworth said the music in my heart I bore long after it was heard no more. ठीक है. इहो चयो हिन solitary reaper में. छा में चई. solitary reaper में चई the music in my heart I bore long after it was heard no more. Wordsworth said the best portion of good man's life. and जो important line था lyrical ballad में आहे. चए थो द बेस्ट पोर्शन ऑफ गुड मैन्स लाइफ. सुठे माण्हू जी ज़िंदगी जो बहितरीनु हिसो कहिड़ो आहे. हिज लिटिल नेमलेस अनरिमेंबर्ड एक्ट ऑफ काइंडनेस एंड लव. तव्हां ज़िंदगी में नंढियूं नंढियूं चङायूं कयो. कंहिं सां अहसान कयो. कंहिं सां थोरा कयो. कंहिंजे मथां भलाई करे छॾियो. कंहिं सां चङाई करे छॾियो. इहो तव्हांजी ज़िंदगी जो बहितरीनु इंसानी ज़िंदगी आहे. उन इंसानी ज़िंदगी जो द बेस्ट पार्ट इज़ when you do very little nameless and unremembered act of kindness. कंहिं माण्हू सां चङाई करे छॾी. कंहिं माण्हू सां अहसान करे छॾियो. कंहिं माण्हू सां थोरो करे छॾियो. कंहिं माण्हू सां भलाई करे छॾी. इहो ई तव्हांजी ज़िंदगी जो वॾे में वॾो हिसो आहे. वर्ड्सवर्थ हिकु लाइन चई इन ते तव्हां कंपेरिज़न ॿुधंदो. मूंखे ख़बर न हुई त वर्ड्सवर्थ ईअं चयो. वर्ड्सवर्थ चयो त एवरी ग्रेट पोएट इज़ अ टीचर. एवरी ग्रेट पोएट इज़ अ टीचर. ऐं मज़े जी ॻाल्हि इहा आहे त मां पंहिंजो जेको किताबु लिखियो सोनोवर जूं सिटूं उन में मां हिकिड़ो जुमिलो लिखियो हुयो. मां वर्ड्सवर्थ जी अॼु पढ़ी आहे त वर्ड्सवर्थ ईअं चयो. पर मुंहिंजो जुमिलो ॿुधो. मुंहिंजो जुमिलो हुन जे अगेंस्ट आहे. वर्ड्सवर्थ चए थो एवरी ग्रेट पोएट इज़ अ टीचर. मां वरी ख़बर पई किताब जी शुरूआत में इंट्रोडक्शन में छा लिखियो आहे. मां चयो त हर सुठो उस्ताद शाइर हूंदो आहे चाहे पोइ हू शाइरी लिखे या न लिखे. ठीकु आहे. वर्ड्सवर्थ चए थो त हर सुठो जेको माना शाइर जेको आहे शाइर आहे उहो उस्ताद आहे. ऐं मां छा चयो. मां चयो हर उस्ताद शाइर हूंदो आहे चाहे पोइ उहो शाइरी लिखे या न लिखे पर उहो शाइर हूंदो ई हूंदो आहे. I was very happy to read this. Wordsworth said every great poet is ज़िंदगी में उस्ताद है.
ठीकु आहे. ऐं वर्ड्सवर्थ चए थो त लेट नेचर बी योर टीचर, लेट नेचर बी योर टीचर. वर्ड्सवर्थ पोएटिक क्रिएशन जूं 4 स्टेजिस ॿुधायो सही. हाणे मूंखे हुनजी ख़बर न आहे त बिकॉज़ डेवलपमेंट जा कहिड़ा आहिनि, पर वर्ड्सवर्थ टेल्स अस दैट हाउ वन कैन कंपोज पोएट्री. चए थो पोएट्री कंपोज करण लाइ 4 शयूं. घणियूं शयूं? 4 शयूं. भाषा ॿुधो गौर सां. नंबर 1 ऑब्जर्वेशन. A poet must have very strong sense of observation because your imagination comes from your primary imagination. Secondary imagination is at work when you have strong primary imagination. उनजे लाइ observation is very much necessary. So Wordsworth चए थो जेको शाइर हूंदो उनजे लाइ पहिरियों कमु करिणो आहे त उहो छा हुजे? सुठो ऑब्जर्वर हुजे, माण्हुनि जो, शयुनि जो, जॻहियुनि जो, हिननि जो. ॿियो उनजो आहे त उनखे he must have a very strong sense of recollection. शइ जेका तव्हां ॾिठी उनजो तव्हांखे strong sense of recollection आहे. वरी उहा शइ तव्हांखे यादि बि अचे, माना तव्हांजी प्राइमरी इमेजिनेशन मां सेकेंडरी इमेजिनेशन तव्हांजो कमु बि करे. वरी वर्ड्सवर्थ चए थो टी शइ जेका ज़रूरी आहे शाइर लाइ उहो मेडिटेशन. वरी हुन ते गौर करे, अखियूं बंदि करे हुन ते गौर करे, हुन सॼी शइ खे रिकलेक्ट करे पंहिंजे ज़हन में. एंड फोर्थ स्टेज इज कंपोजिशन. पोइ वञी का बि शइ कंपोज करे. मीन्स ऑब्जर्वेशन, देन रिकलेक्शन, थर्ड मेडिटेशन एंड फोर्थ कंपोजिशन. The next poet in the series is Coleridge, Samuel Taylor Coleridge. 1772 में जाओ, 1834 में जेको आहे he passed away. Wordsworth खां जेको आहे सो 2 साल नंढो हुयो, because Wordsworth was born in 1770, he जाओ 1772 में. Wordsworth का अॻु में गुज़ारे वियो. Wordsworth died in 1850, he जे गुज़ारे वियो 1834 में. हिन खे असां पोएट ऑफ सुपर नेचरलिज्म सॾींदा आहियूं, छाकाणि त हीउ चवंदो हो पोएट्री में सुपर नेचुरल एलिमेंट हुजणु खपनि, पोएट्री आसान हुजणु खपे, डिफिकल्ट हुजणु खपे, हुन में का न का हिकिड़ी फिलोसॉफिकल ॻाल्हि हुजणु खपे. ही वॉज बोज़म फ्रेंड एंड लिटरेरी कोलैबोरेटर ऑफ वर्ड्सवर्थ. ज़िंदगी में हिन सां वॾा सीन थिया, तंहिं करे अफ़ीम खाईंदो हो. सीन उहो ज़िंदा कुझु न थिया हुआसीं. कुझु माण्हू त ॿियूं ॻाल्हियूं कंदा आहिनि, उहो ॾिठो कयां. माई बि हिन मिली हुई जेका हिन खां वधीक होशियारु आहे. तंहिं करे ख़्यालु कजो, माई तव्हां खां वधीक होशियारु आहे त बि वेल आहे, माई तव्हां खां वधीक सुहिणी आहे त बि वेल आहे. त हिन वरी छा कयो, हिन सायो करे हिन खे शो कयो. हिननि हिकिड़ी सोसाइटी ठाही, हुन नालो मूंखां विसरी वियो आहे, हसन साहब खे यादि हूंदो. पेंटिसोक्रेसी जे नाले सां सोसाइटी ठाही. उन में हिननि छा कयो ॿुधो, दे डिसाइडेड दैट वी विल कलेक्ट द जीनियस ऑफ वर्ड्स. असां होशियारु माण्हू पाण खे गॾु कंदासीं, पोइ वरी जीनियस माइंड सां शादी कंदासीं. वी विल मैरी द जीनियस वुमन. पोइ जेके असांजा ॿार थींदा उहे बि जीनियस थींदा ऐं उहे पोइ वरी दुनिया में कंट्रीब्यूट कंदा. हिननि अमेरिका में हिकिड़ो जज़ीरो बि ख़रीद कयो त वी विल सेटल देयर. असां उते वञी सेटल थींदासीं, हिकिड़ी दुनिया ठाहींदासीं. ॿिया हाणे जेसीं ताईं ॿिया मायूं ॻोल्हनि, हिननि जे मथे में हिकिड़ी जीनियस लॻी वेंदी. वर्ड्सवर्थ जी भेण हिन खां वधीक जीनियस ई पोइ हिननि जी अंडरस्टैंडिंग ठहंदी कोन. पोइ हुन माई जे सूर खां बचण लाइ जीअं पाण सिगरेट कंदा आहियूं, ठीकु आहे, ईअं हिन जेको आहे सो चर्च ते माना मारो शुरू कयो, अफ़ीम खे मारो शुरू कयईं. ठीकु आहे, अफ़ीम रिलेटेड. पर अफ़ीम खाई पोइ हमरा जो दिमाग़ जेको कमु कंदो न, त प्राइमरी इमेजिनेशन खां निकिरी सेकेंडरी इमेजिनेशन ईंदो. पर हिन सेंस में थर्ड इमेजिनेशन बि हूंदसि. ठीकु आहे, पर पाण चए थो त इमेजिनेशन ॿ क़िस्म जो, न त चऊं हाणे थर्ड इमेजिनेशन हुई. अच्छा, उन अफ़ीम जे असर खां निकिरंदो त पोइ ही कुड नॉट कंटिन्यू. हिन जे करे हिन पोएम्स फ्रेगमेंट्स में बि आहिनि. कुबला खान ख़ासि तौर ते हिन लिखणु शुरू कयो त हिनजो दोस्त आयो जंहिं हिनखे इंटरप्ट कयो. तंहिं करे चवंदा आहिनि त कंहिं घर वञे त पर पुछा करे हमरा मसूबत में न आहे, ऐं ख़ासि तौर ते कंहिं शाइर वटि ओचितो न वञणु खपे. मथां त असर वटि अञा हलियो ऐं दुनिया महिरूम थी वञे, माना शरीर जेको आहे शाइरी खां. त हू हुन कुबला खां लिखे थो, दोस्त आहे, हुनखे कावड़ त ॾाढी आई, पर हाणे दोस्त खे माना एंटरटेन कयो. दोस्त वियो, हुन खां पोइ स्टार्टेड टू रिकम्पोज इट, बट ही कुडंट रिकम्पोज एंड इट बिकेम अ अनफिनिश्ड वर्क. ठीकु आहे. ऐं हिन जो मशहूरु फेमस वर्क एंड हिज कंट्रीब्यूशन इन क्रिटिसिज्म इज बायोग्राफिया लिटरेरिया. बायोग्राफिया लिटरेरिया में हिन असांखे ॾिनी कॉन्सेप्ट ऑफ फैंसी, कॉन्सेप्ट ऑफ इमेजिनेशन, प्राइमरी सेकेंडरी इमेजिनेशन आई हैव एक्सप्लेन टू यू. ऐं ॿियो हुन में हिकिड़ो वॾो कॉन्सेप्ट हुई त शाइर में हुजणु खपे छा, विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ. And willing suspension of disbelief, I had explained it earlier, but I am going to repeat it. The माण्हू खे ख़बर हुजे त this thing is not like that. इहा शइ ईअं न आहे, पर पोइ बि माण्हू willingly पंहिंजे disbelief खे सस्पेंड करे छॾे. मिसाल जी ॻाल्हि, फिल्म में शाहरुख साईं मरे थो, आख़िर में देवदास में शाहरुख मरे थो न. हाणे असांखे ख़बर आहे त देवदास न आहे, शाहरुख आहे, वरी ॿी फिल्म में ईंदो, पर जंहिं महिल मरंदो आहे न उन वक़्तु असां चवंदा आहियूं शाहरुख
वीचारा देवदास करे वरी असां खे रोण शुरू थी वियो इहो छा आहे असां विलिंगली पंहिंजे डिसबिलीफ खे सस्टेन करे असां सम्झूं था त इशारो कंदा आहे देवदास ठीक है तॾहिं करे थ्योरी विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ इज गिवन इन पोएट्री बट इट्स मोर अप्लाइड इन ड्रामा में वधीक अप्लाई थींदी आहे ठीक आहे उन खां लिटरेरी क्रिटिसिज्म जो जेको लिटरेरी बायोग्राफी आहे उहो लिटरेरी क्रिटिसिज्म जो बुक आहे बेसिकली हिन जो मशहूरु पोएम आहे द राइम ऑफ एंशिएंट मैरिज उन में हिकिड़ो बर्ड जेको थियल आहे जंहिंजे मरण जेको आहे सो बदकिस्मती आणी आहे बर्ड जो नालो आहे अल्बेट्रॉस ठीक आहे अल्बेट्रॉस हिकिड़ो पखी आहे सी बर्ड आहे उन जो मरण बेसिकली ब्रेक्स दी मिज़री एंड डाउनफॉल ठीक आहे डिस्ट्रक्शन कुबला खान हिन जो रोमांटिक पोएम आहे जेको हिन लिखियो ओड ऑन डिजेक्शन जो पोएम आहे क्रिस्टोफर हिन जो मशहूरु पोएम आहे हिन जी मशहूरु लाइनूं वाटर वाटर एवरीवेयर नो एनी ड्रॉप टू ड्रिंक आए चारों तरफ पानी छाकाणि समुंड में आहे न मेरीनर्स एंशिएंट मेरीनर्स सभु ॿेड़ीकारनि खे मलाहनि खे त मलाह समुंड जे विच ते आहे जो पाणी ख़तमु थी वियो पीअण वारो पाणी त पोइ ॾिसी करे चए पियो त वाटर वाटर एवरीवेयर नो ड्रॉप टू ड्रिंक चारों तरफ पाणी खां पर पीअण लाइ हिकिड़ो कतरो बि कोन्हे हुन में चए थो अलोन अलोन ऑल अलोन अलोन ऑन अ वाइड वाइड सी अकेला 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 हिन सॼे समुंड में माना जेको आहे पाण चयूं अकेला आहियूं ऐं हिन जो मशहूरु कोटेशन जेका मूंखे तमामु घणी वणंदी आहे उहो थो चए त ही प्रेज बेस्ट हू लव्ड बेस्ट जेको इश्क कंदो उहो ई दुआ घुरंदो जेको सुठो इश्क कंदो ही प्रेज बेस्ट हू लव्ड बेस्ट ठीकु आहे जेको सुठो इश्क कंदो उहो ई सुठी दुआ कंदो ऑल थिंग्स बोथ ग्रेट एंड स्मॉल नंढियूं शयूं हुजनि या वॾियूं शयूं हुजनि उन जे लाइ ज़रूरी आहे त तव्हांजो इश्क सही हुजणु ज़िंदगी में नंढी शइ वॾी शइ का बि न आहे तव्हांजो इश्क हुजणु खपे पोइ तव्हांजूं दुआऊं बि क़बूल ऐं इन सीरीज़ में पाण अॻिते हलूं त ॾिसी शेले आहे शेले इज़ नोन एज़ रिवोल्यूशनरी पोएट लिरिकल पोएट पोएट ऑफ विंड बि सॾींदा अथसि पोएट ऑफ होप बि सॾींदा अथसि पोएट ऑफ रीजनरेशन बि सॾींदा अथसि ही वॉज एक्सपेल्ड फ्रॉम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़े पियो उतां कढी छॾियोसि हिन हिकिड़ो किताबु लिखियो नेसेसिटी ऑफ एथियज़म because at that time he was confirmed atheist खुदा खुदा खे न मञींदो मज़हब खे न मञींदो तंहिंजे करे हिनखे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी मां कढी छॾियोसि कीट्स सां ॾाढो इश्क कंदो वणंदोसि कीट्स तंहिंजे करे कीट्स जे मरण ते हिन एलिजी बि लिखी हुई ऐं उन में हिन चयो हुयो ही हुयो जंहिं चयो त कीट्स वॉज किल्ड बाय द क्रिटिक्स कीट्स खे हक़ीक़त में कंहिं मारियो आहे बीमारी न मारियो आहे कंहिं मारियो आहे क्रिटिक्स मारियो आहे Unfortunately, he had drowned in the sea. समुंड में मरी वियो उन समुंड जो नालो आहे एड्रियाटिक सी छा एड्रियाटिक सी ADRIATIC एड्रियाटिक सी 1922 में रूम जे वेझो आहे शेले वॉज डाउन अच्छा शेले जॾहिं मरी वियो त उन वक़्तु बि हिन जे खीसे में पॉकेट में हिकिड़ो किताबु हुयो उहो किताब में कीट्स जी पोइट्री जो कहिड़ो इहो सॉन्ग ईंदो अथव त वैन शेले डाइड त कहिड़ो किताबु हिन वटि मौजूदु हुन वक़्त में अच्छा हिन जा मशहूरु किताब आहिनि द रिवोल्ट ऑफ इस्लाम ठीकु आहे उन खां अलावा डिफेंस ऑफ पोएट्री बि हिन लिखियो हिन नेसेसिटी ऑफ एथियज़म लिखियो न रिवोल्ट ऑफ इस्लाम हिन जो बेसिकली हिकिड़ो पॉम्फलेट हुयो ठीकु आहे ऐं जेको नेसेसिटी ऑफ एथियज़म हिन जो हिकिड़ो पॉम्फलेट हुयो हिकिड़ो आर्टिकल माना लिखियो जंहिं तव्हां हिनखे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी मां कढी छॾियो प्रोमिथस अनबाउंड तव्हांखे हुन ॾींहुं मां ॿुधायो हुयो प्रोमिथस अनबाउंड हिन जो जेको सो प्ले आहे ट्रेजिडी आहे बेसिकली पर कहिड़ी ट्रेजिडी कहिड़ो प्ले आहे इहो लिरिकल प्ले आहे ठीकु आहे न पोएटिक प्ले आहे उन खां अलावा हिन जेको सो सेंसी लिखियो एडोनिस हिन लिखी कीट्स ते एलिजी हिन जेका कीट्स ते एलिजी हुई हुन जो नालो छा हो एडोनिस ओ टू वेस्ट विंड हिन जो लिखियल आहे ओ टू स्काइलार्क हिन जो लिखियल आहे द क्लाउड हिन जो लिखियल आहे मशहूरु पोएम अथसि ओज़ीमंडियास हिन जो सोनेट आहे कून मेव हिन जो लिखियल आहे एलाफ्टर हिन जो लिखियल आहे हिकिड़ो ॿियो हिन जो पोएम आहे जेको तव्हांजी क्लास में पढ़ाईंदा आहिनि हाणे आहे म्यूज़िक व्हेन सॉफ्ट वॉइस डाइज ठीकु आहे न फर्स्ट स्टैंडर्ड में ओ टू द वेस्ट विंड हिन जो आहे ठीकु आहे त मास्क ऑफ अनार्की बि हिन जो आहे हिन जा मशहूरु कोटेशन पढ़ण खां पोइ असां सां गॾु हूंदा ही चए थो त इफ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड इफ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड चए थो जॾहिं सियारो अचे थो त छा ॿाहिरि आहिनि अच्छा कैन विंटर इफ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड इहो हुन जो ओ टू वेस्ट विंड आहे ओ टू वेस्ट विंड हिन जो 80 लाइन जो आहे 100 खां मथे लाइन जो पोएम आहे ऐं मां सॼो सिंधी में ट्रांसलेट कंदो आहियां पोएट्री
ठीक है कोई शेयर कंदो मां ग्रुप ते ठीक है दोस्तों सिंधी में मार्के में हां इंटरनेट में इंटरनेट अच्छा लाइनूं पर ही सॼो माना 100 कम थे लाइनूं वो सॼो मां जेको आहे सो माना ट्रांसलेट कयो सिंधी में पर वर्स में ये ना तो लफ्ज़ बाय लफ्ज़ वर्स में माना पोएट्री की ट्रांसलेशन छा में कई आहे पोएट्री में कई आहे उन खां अलावा ही चए थो त ओ लिफ्ट मी एज वेव अ लीफ ऑफ क्लाउड आई फॉल अपॉन द थॉर्न्स ऑफ लाइफ ओ टू वेस्ट में रिक्वेस्ट थो करे त मूंखे खण मां हिकिड़े पननि वांगुरु जेको आहे सो छॾियल आहियां किरियल आहियां अच्छा इन मशहूर कोटेशन जेका मूंखे वणंदी आहे चवंदो आहे त पोट्स आर दी अनएक्नॉलेज लेजिस्लेटर्स ऑफ द वर्ल्ड हिन दुनिया खे हलाइण जे लाइ कानून ठाहिण जे लाइ शाइरी आहिनि जेके अनएक्नॉलेज लेजिस्लेटर केरु एक्नॉलेज नथो करे ही चए थो त फियर नॉट द फेलियर वीप नॉट फॉर द पास्ट तव्हां जे लाइ सभिनी जे लाइ फियर नॉट द फेलियर शिकस्त खां घबरायो न उन खां डिॼो न एंड वीप नॉट फॉर द पास्ट भाषा जेको थी वियो सो थी वियो ऐं हे चए थो त our sweetest songs are those that tell of saddest thoughts चए थो सुहिणा गीत उहे जेके ॾुख जी घणी थी विया ठीकु आहे हिन मशहूरु पोइम आहे द मोर वी स्टडी द मोर वी डिस्कवर अवर इग्नोरेंस जेतिरो घणो पढ़ूं था ओतिरो असांखे ख़बर पए थी त पाण केॾा वॾा जाहिल आहियूं इन ते डिस्कार्ड चयो न आई नो दैट आई नो नॉट मां इहो ख़बर पए थी त मूंखे कंहिं शइ जी बि ख़बर न आहे अच्छा उन दौर में जेको आहे मैरी शेले हुई उन जो वरी मशहूरु नॉवल अथव फ्रैंकेस्टीन जेको गॉथिक नॉवल में ऐं साइंस फिक्शन में हिकिड़ो वॾो कंट्रीब्यूशन उन दौर जो रोमांटिक एज जो आहे सो अदर राइटर्स ऑफ रोमांटिक एज विल बी कवर लेटर एंड सिंस ऑफ दिस ईयर वी विल टेक द क्लास थैंक यू वेरी मच फॉर योर पैशंस फॉर लिसनिंग इंशाल्लाह विल कंटिन्यू सो विल बी सस्पेंडिंग द क्लासेस जी खां पोइ क्लास सस्पेंड कंदासीं जनवरी में तव्हांखे ग्रुप में ॿुधाईंदासीं जीअं यूनिवर्सिटी शुरू थींदी त वी विल रिज़्यूम आवर क्लासेस ठीकु आहे थैंक यू